So we are in Control and Coordination, Chapter 9. So everybody should be on page number 183. So on page 183, we have neural tissue. Neural tissue means when you talk about this figure, आपके सामने आपको ये structure दिख रहा है, ये है क्या? This is your entire nervous system. This is original nervous system of a human. Okay, so muscles नहीं है, skeleton नहीं है, सिर्फ nervous system दिख रहा है आपको यहाँ पे. They have, okay, you will ask that vertebral column तो है वहाँ पे. हाँ, थोड़ा सा vertebral column का they've kept it because to give support to the जो spinal nerves हैं उनको support देने के लिए they've kept this pelvic girdle and the vertebral column. But basically if you look at the other structures, all you find is the nervous system. तो ये अगर एक nervous system है, so it's a system, right? In your lower classes you have said system is formed by the combination of tissue. तो एक nervous system को or organ, right? So many organ come together. Let's say many organ come together to form a particular organ system. So अभी देखा जाए तो क्या क्या है यहाँ पे? You find the brain, right? The brain, then the spinal cord, and then the peripheral nervous system. So it's all like together. All the system together, all the organs together forms this entire nervous system. तो आपका पूरा जो nervous system है वो बनता है nervous organ से. Organ किससे बनता है? Tissue से. Tissue किससे बनता है? Cell से. So now we are going to understand what particular cell is responsible for making your entire nervous system. So you're on page 183, which we have just said. So we just saw a nervous system. So when you talk about the system is formed of many organs. Many organs, they are formed of many tissues. Many tissues are formed of the cells. So the tissues which we are talking about, it is the neural tissue. So what are the two different neural tissues you have? Neuron and neuroglia or glial cells. Glia means sticking cells, okay? So हमने already 11th में किया है neurons and neuroglial cells, where we have already said neurons क्या है? Main hero, right? And उसको help करता है, support करता है, that's the neuroglial cells or glial cells. So these are supporting cells. So two cells are there, they are coming together to form the neural tissue. So many neural tissue come together to form the your nervous system's organ, and many organs come together to form your nervous system, right? So when you talk about these nerves, they are all in a bundle, right? They are in a group. और ये जो cells हैं और ये जो हमारे nerves हैं, they are basically divided into two, sensory and motor. These are main first, okay? इनके बीच में एक intermediate है, that also we are going to study. So जितने भी nervous organs हैं ये बने कैसे हैं? हमारे body को nerves के help से, motor और sensory nerves के help से बने हैं. And then basically what do? They help in bringing the coordination and control of the body activity, right? That's something very important. अगर बाहर ठंडी है, so it will ask you to have more food, right? So you want to keep yourself hot. So the control and coordination from the external environment and also in the internal environment of your body, it's all done by your central, or we can say your nervous system, that's controlling with your body, your other glands, and making you live in a very normal state. Now let's talk about the first cell, that's the neuron. So you're going to be on page number 184. So हम neurons को देखेंगे. So this is the structure of neuron which we have learned in 11th standard, right? So exam में what is explain the structure of neuron आया तो it's very simple. What all things you can say? This can be moved here. So when you have a neuron,
or the main structure. This is the neuron. Okay, so कितने neurons हैं हमारी body में? We have billions of neurons. So you all are having how many neurons? Billions of neurons. So basically if you say what is a neuron, it's a structural and functional unit of your nervous system. अगर इसको देखेंगे तो ये जो structure है वो कैसा है? हमने पढ़ा था मल्टी पोलर, क्योंकि इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, right? So many processes are coming out of the cell body, right? So that's why we say it is multipolar neuron. Neuron were like categorized. So इसके structure में what are the different parts? So जो ऊपर का हिस्सा है, this is called as cell body. Then you have cell body के साइड से extensions है, ये जो यहाँ पे हैं, you call them dendrons or dendrites. Okay, that's a plural and singular. And then this extension, yellow color extension, that's the axon. So that's forming your entire nerve cell. तो आपके nerve cell किस 3 चीज़ों से बने पूछ सकते हैं? One is cyton, that is a cell body, जिसमें से आते हैं second structure, that's the dendron, and then तीसरा axon. Now कुछ बच्चों के मन में doubt होगा, but nobody asked when I was taking this class, what's the difference between these dendrites and axon? So simple, when you're talking about the messages, I'll just change the color. मैसेज को सेल बॉडी तक लेके आने का काम होता है डेंड्राइट का. ओके, लेकिन एक्सन का काम क्या है? सेल बॉडी से दूर दूसरे नर्व सेल्स में मैसेज लेके जाना होता है, एक्सन का काम. सो आई होप यू आर क्लियर विद द डिफरेंस ऑफ डेंड्राइट. डेंड्राइट मैसेज लेके आता है, सो इट्स अ रिसीवर, राइट? एंड एक्सन, it is the giver. It is taking away the message from this cell body, right? From this cell body. So basically cell body को हम बोलेंगे तो इसके अंदर है क्या? You can see this diagram very clearly. What do you have in this cell body? You have a green color. Can you see that central nucleus? And central nucleus के आसपास जो purple color का area है, that's all the न्यूरोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म की जगह हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया? न्यूरोप्लाज्म. देन यू हैव, there would be, they have not shown it here, but they were supposed to show some Nissl granules. Okay, Nissl granules होते क्या हैं? They are riboprotein. What are they? Riboprotein. And what do they do? What's the main function? Okay, we're going to do that in the chapter when we are doing the textbook. Okay, और क्या है? नेक्स्ट क्या प्रोसेस है यहाँ पे? डेंड्रॉन्स हैं. लेट्स सी व्हाट आर डेंड्रॉन्स. कैन यू सी दिस डेंड्रॉन्स? स्मॉल स्मॉल डेंड्रॉन्स, डेंड्राइड्स, डेंड्रॉन्स एक साथ. दे आर सिंगुलर, तभी डेंड्राइड लिखा है. जब एक साथ होते हैं डेंड्रॉन्स. सो दे आर सो मेनी डेंड्रॉन्स, एंड the message is transferred from this cell body outside is through the axon. Okay, और अगर हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर को, अब एक और अगर हम बनाते हैं एक और नर्व सेल. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अनदर नर्व सेल हियर. सो okay, there is extension here, there is extension here, there is extension. So that's how the nerve cell. Okay, now see, अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे ये एक सेल है. दिस वन इज द अदर सेल. सो वी हैव वन नर्व सेल कनेक्टेड टू द सेकेंड नर्व सेल विथ अ गैप. ये जो जंक्शन दिख रहा है बिटवीन टू डेंड्रॉन्स, एक्सन के डेंड्रॉन्स से और दूसरे के सेल बॉडी के डेंड्रॉन्स के बीच का जो कनेक्शन है, इट्स अ गैप. दैट इंटर कनेक्शन इज नोन एज synapse. What do you call it? It's called as synapse. Okay, synapse में आता है केमिकल जिसकी वजह से मैसेज पास होता है. क्विक ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज हैपन्स थ्रू द synapse. So we have already understood
the न्यूरॉन्स, राइट। हमने बोला न्यूरल टिश्यू दो चीज़ से बनी है, न्यूरॉन से और न्यूरोग्लियल से। सो न्यूरॉन अभी हमने समझा, जो हमने ऑलरेडी 11th में किया, राइट। न्यूरॉन की बॉडी कैसी बनी है, इफ़ यू जस्ट सी दिस, हाउ विल यू एक्चुअली टॉक अबाउट न्यूरॉन? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। 3 पार्ट है, साइटोन है, डेंड्रॉन है, एक्सन है। एंड साइटोन में एक सेंट्रल न्यूक्लियस है। देन यू हैव जो साइटोप्लाज्म को हम न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं, राइट। एंड इसके अंदर निसल ग्रैन्यूल भी होता है। एंड देन यू हैव डेंड्रॉन्स, जो छोटे छोटे एक्सटेंशंस हैं साइटोन से। देन द लॉन्ग प्रोसेस, दैट्स द एक्सन. Now there's a question here, if you just see this area, yeah, very important question. What is the function of Nissl granule? So you can just underline, they help in synthesis, okay, just underline this, they help in, can you see that? If you count, यहाँ से count करो, 1 2 3 4 5, 5th line में देखो, they play an important role in the synthesis of enzyme required for the formation of neurotransmitters. Neurotransmitter is a chemical that is released during the stimulus. Stimulus मतलब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, if there is a pin pricked on your hand, तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ पीछे जाता है। तो पिन का प्रिकिंग जो होता है, जो सेंसेशन आपके स्किन से जाता है आपके नर्वस सिस्टम में, फिर वापस रिटर्न मोटर न्यूरॉन्स लेके आते हैं और हाथ को पीछे खींचता है, राइट। दैट्स रिफ्लेक्स. सो क्विक एक्शन इज हैपनिंग, दैट्स बिकॉज ऑफ द केमिकल रिलीज्ड. सो दैट्स केमिकल इज़ नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर. तो उस न्यूरोट्रांसमीटर को बनने के लिए जो एंजाइम लगता है, उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है ये जो निसल ग्रैनुअल, जो कि राइबोप्रोटीन इनसाइड द न्यूरॉन्स है, राइट. सो नाउ वी हैव, अब न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर था आपने देखा, देयर वाज एक्सन को अगर हम एक और बार यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, इफ़ दिस इज़ एन एक्सन, एक्सन के ऊपर माइलिन शीट्स थे, राइट. ये माइलिन शीट है. सो दिस माइलिन शीट इज़ समथिंग दैट्स, यू नो, अगर माइलिन शीट है तो हम बोलते हैं मेड्यूलेटेड, राइट. मेड्यूलेटेड क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीट है. और अगर माइलिन शीट नहीं है, सो यू डोंट गेट कन्फ्यूज, दिस इज़ द माइलिन शीट ऑन द एक्सन. एक्सन के ऊपर माइलिन शीट होता है. कुछ एक्सन के ऊपर माइलिन शीट नहीं होता, लेकिन माइलिन शीट से क्या होता है, कंडक्शन बहुत ही फास्टर होता है, 50 times फास्टर. सो यू अंडरलाइन इट हियर. In the next page you will see conduction of impulse is 50 times faster in medullated nerves, that is myelinated, covering वाले nerves में. Okay. Then the next cell which we have to study, neuron के बाद, that's the neuroglial cells. So for today's put the heading न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स. पहले आप देखो नर्वस सिस्टम के अंदर का बेसिक्स 2 सेल होता है, न्यूरॉन्स एंड द न्यूरोग्लियल सेल्स. सो न्यूरॉन्स के बारे में यू जस्ट राइट नोट पुटिंग टुडेज डेट.